I think I'll start with the like I said, I said, like when you're alone, it's better to travel to the city because you need that social connect. And when you're alone, if you go to like a random place, I'll give an example. Okay, last trip, Thanksgiving pay, I went to Crater Lake, and I was very happy कि मेरे को ऐसे अकेले जाने को मिल रहा है. And I was like थोड़ा skeptical because Crater Lake में there is snow on the street, and I was driving like a rear wheel drive car. And I was like, "Hey, हो जाएगा, I'll manage because I've managed to drive with the sort of पहले भी Yellowstone में and like उधर Olympic में. Now drive 7 hours, 14 hours, हो जाएगा. But then I realized उधर ऊपर जाते वक्त there is a snow on the street, and like there was a snowstorm on the weekend before, and like the snow hasn't like melted yet because like the tree that some of the streets were shadowed, and then like there was that there was like a very slippery snow, like a black ice sort of snow, and then there was no one, no park rangers, no one, and like फिर मैं उधर check point पे पहुंचा, and then I saw कि ऐसे पार्क रेंजर को पूछा कि इज इट सेफ ऊपर जाना, and he was like हाँ ऊपर लोग हैं, just धीरे धीरे चला. And then when I went up, I finally saw so many people, so it's like I was not the alone, I was not the only person who was doing like weird things. So then when I came back, I was much more comfortable. I drove much faster. I saw some of the गाड़ियाँ ऐसे slip होके रास्ते के बाजू में, but then it was okay. Like, and then after that I decided कि अकेले जाना है तो usually prefer the cities, mostly New York. शैम्बू को ही जाके परेशान करना है उधर. And then I remember the पिछला Thanksgiving वाला trip, it was super fun. Cities are fun when you're alone. You can explore more stuff in your loneliness. So एक चीज I'll take, मतलब I just go back to the previous accusation that does level against me कि मतलब ऐसा नहीं कि I'm not saying कि you should not मतलब plan or Fridge prep anything magnet. for a trip. हाँ, both fridge magnet as well as mandatory checklist types. Obviously like कुछ चीजें जरूरी है, जा रहे हो like just to ऐसा लैंडमार्क प्लेसेस करना जरूरी है because that gives you a sense of जैसे this is a landmark right behind me जो मेरे screen saver है. So that is kind of a landmark. So places like these are essential, that you go to some place that मतलब give you a sense of being there and मतलब एक तरीके से हाँ मतलब you've been there and you're back. मतलब you probably can't do everything but कुछ चीजें करना जरूरी है. And जो fish market वाला था, we went in through the wrong gate and वापस we couldn't go back to that gate. इस वजह से we couldn't go and get that fridge magnet. But I am all up for it. I don't buy fridge magnets everywhere, but I do And understand the importance of it. Shempo got So angry with me कि मैंने झाप दिया fridge magnet. नहीं, सो एग्जैक्टली लाइक तुझे बोल रहा है कि मतलब अकेले जाओ तो सेक्लूडेड जगह पे यू माइट गेट स्केयर्ड या फिर अटक गए तो क्या. बट at least in my experience those are the places which have given me like the best stories. जहां पे मैं अकेला अटका हूं ना, मतलब तुमको पता नहीं है कि तुम एक दिन में बाहर निकल रहे हो, 3 दिन में बाहर निकल रहे हो, लाइक दैट टाइम स्टेज विथ यू. मतलब we want to hear it right now. Yeah. हाँ, मतलब ऐसा स्पेसिफिक एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है बट लाइक एक बताऊंगा जहाँ पे अकेला नहीं था, मैं रूममेट्स के साथ गया था. वी वेंट टू बिग बैंड नेशनल पार्क. अभी ये इसमें 4 यूएस के लोग हैं तो बहुत सारे यूएस के एग्जांपल्स निकलेंगे, और मतलब फ्रैंकली मैं भी यूएस में ज्यादा घूमा हूँ इंडिया से. बट एनीवे, बिग बैंड नेशनल पार्क में गए थे विच इज राइट ऑन द बॉर्डर ऑफ यूएस एंड मेक्सिको. लाइक तुम मेक्सिको की जमीन ऐसे लिटरली 4 फीट पे देख सकते हो, इतना पास है वो. यू कैन गो दैट क्लोज टू द बॉर्डर. एक नदी सेपरेट कर दी उसे. It's a national park in the middle of nowhere. कुछ नहीं है आजू बाजू. People mostly go there for stargazing because no city lights, no light pollution, nothing like that. हम उसी लिए गए थे. We booked a campsite on Airbnb in the middle of nowhere. आजू बाजू में कुछ घर नहीं है. It's like from that campsite, if you draw basically a 50-mile radius वाला circle, एक भी लाइट नहीं रहेगा वहां पे. Not a single shop, not a single house, nothing. उतना रिमोट था वो. वहां पे हम लोग पहली बार गए, रात में पहुंचे, कैंपिंग करने वाले थे. कैंपिंग किसी ने किया नहीं था उससे पहले. व्हेन वी रीच्ड देयर वी वर लाइक अरे दिन में पहुंचे रहते तो टेंट लगाने में इजी रहा रहता, क्योंकि किसी ने टेंट भी नहीं लगाया था उससे पहले. नोबडी न्यू इवन हाउ टू डू इट. हम लोग को ठंड में विंड में देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि कहीं पे इंटरनेट नहीं है तो यूट्यूब पे नहीं देख सकते. लाइक यू कैन नॉट डू एनीथिंग. समहाउ वी मैनेज, समहाउ वी स्लेप्ट. एंड वो जो प्लानिंग की है बिना जाने वाला पॉइंट था, कमिंग बैक टू वल्लभ's फोकस ऑन द मून, वो रात में ऑलमोस्ट फुल मून था तो स्टारगेजिंग भी नहीं हुआ हमारा. दैट वाज एन अनप्लान्ड ट्रिप इन द मिडल ऑफ नोवेयर. तो कपल मंथ्स लेटर वी वेंट टू द सेम प्लेस एंड उस वक्त पूरा प्लान किया था, न्यू मून देख के ही जाएंगे, अभी टेंट कैसे लगाना है पता है, विल मेक श्योर वी रीच इन डे टाइम.
and that was one of the most amazing trips I've ever been to, क्योंकि वहां पे जो स्टारगेजिंग हुआ था वो और कहीं नहीं हुआ. बट स्टिल दैट फर्स्ट ट्रिप जहाँ पे गाड़ी में सोना पड़ेगा या फिर टेंट में सो सकते हैं वाले तक जब क्वेश्चंस आते हैं, like those are the things that you don't forget. So तेरा जो क्रेटर लेक वाला एग्जांपल था, so yeah, I've been there, I've driven in snow जहाँ पे पता नहीं गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, but yeah, like I like it. मतलब एडवेंचर कहो या फिर कुछ भी, फॉर मी दैट्स फन. अकेला रहूं तो स्पेशली. Adventure actually is quite fun. I just think कि थोड़ा सा तो मतलब मेरे को मरना नहीं है, बाकी कुछ भी हुआ तो चलेगा, बस मरना नहीं है. तो मेरे को भी मरना किसी को नहीं रहता. I mean that's a I think given. That's the base minimal. कवर्ड एडवेंचर इज गुड. जैसे हम लोग ओलंपिक में गए थे, तो एक फ्रेंड के साथ गया था, एंड वी वेंट टू द बीच, एंड वो बीच से ऐसे थोड़ा रॉकी एरिया था. इट वेंट ऐसे रॉक्स के ऊपर से जाओ, एंड इट वाज लाइक अ रॉक इन द मिडल ऑफ द सी ऐसे. तो देयर वाज जैसे ऐसे नैरो रास्ता वहां जाने के लिए, एंड माय फ्रेंड स्टॉप लाइक वे बिहाइंड. ही डिडंट वांट टू डू इतना एडवेंचर, एंड आई वाज लाइक कि मैं काफी मतलब उतना तो कर सकता है, लाइक आई हैव सम कवरेज, मैं उसको आवाज देके कॉल करके ऐसे बुला सकता था. तो इन दैट केस आई फेल्ट रियली लिबरेटिंग. ऐसे उधर जाके देयर वाज नो वन लाइक ऐसे लाइक पास में कुछ भी लोग नहीं दिख रहे थे लिटरली, एंड देन लाइक इट वाज जस्ट ओशन चारों साइड से, एंड दैट रॉक वाज लाइक इन द मिडल ऑफ द ओशन. So it was really pretty, and it was like really liberating कि ऐसे वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा है, and I recorded a bunch of videos मोडक को भेजने के लिए. So it was very happy क्योंकि मोडक में ऐसे similar video भेजा था, तो मैंने ऐसे specially मोडक के लिए video वहाँ पे बनाया. So it was fun. तो ऐसे controlled risk is थोड़ा good, but थोड़ा ज़्यादा risk is थोड़ा scary sometimes. But see, Nikita, like in your case, I'm surprised with what you said, क्योंकि अभी तू इतना टेक्सास में रही है, तो टेक्सास इज लाइक लिटरली द डेफिनेशन ऑफ इन द मिडल ऑफ नोवेयर. इतनी जगह मिल जाएंगी वहां पे जहाँ पे आजू बाजू कुछ नहीं. सो आई मीन फॉर यू दैट शुड बी लाइक अ कंफर्ट जोन, राइट? हाँ यार, टेक्सास वाज कंफर्ट जोन फॉर श्योर. बॉस्टन में एडजस्ट होने को साल लग गया एटलीस्ट. तो हाँ, टेक्सास इज ग्रेट बिकॉज इट्स लाइक पूरा खुला खुला, एवरीथिंग इज लाइक लार्ज. वॉलमार्ट्स उधर के, और लिटरली एक सादा मैकडोनल्ड्स भी 4 फीट लाइक 4 टाइम्स साइज करेगा. तो everything is big. Parking lots are like 10 times the size that people need or have cars. बहुत सही है. बट घूमने के लिए जीरो है यार. टेक्सास में सिर्फ 3-4 सिटीज है. और मैं तो ऑलमोस्ट कभी भी टाइम रहा, वीकेंड रहा, तो मैं उठ के ऑस्टिन और सैन एंटोनियो ही जाती थी. एंड ऑस्टिन हैज सम रियली गुड फूड. तो आई मीन आई एंजॉयड दैट. बट आफ्टर कमिंग टू बॉस्टन, इधर तो अनलिमिटेड चीजें है यार करने को. और कनाडा भी पास में ही है, तो यू कैन जस्ट ड्राइव टू कनाडा. न्यूयॉर्क पास में है, डीसी भी रीचेबल है, बहुत ही चीजें है रीचेबल. तो ऑफ कोर्स मतलब टेक्सास वाज कंफर्ट जोन, बट देयर आर मोर थिंग्स टू डू इन द नॉर्थ ईस्ट. I think that's what I like about the East Coast. It has like a lot more history, and I say like there is a lot to do in the city. It's called culture, I think culture. yes, it has a lot of culture. So I think you both will like have a lot to say about that. Or maybe I like that much more. Culture like टेक्सास में museums and बहुत है, ठीक है. कि मुझे मरना नहीं है because Texas का culture can take you like very close to proximity to death is like high, very high gut culture, like very strong. बहुत सारा अलग अलग टाइप का कल्चर. लेट्स नॉट गो दैट डाउन दैट लेन, बट हाँ, वेरी रिस्की कल्चर टेक्सास में. बट फन भी है यार. एक बार लाइक मेरे को इतने बार वहां कैब ड्राइवर्स या बेसिकली लाइक उबर ड्राइवर्स मिले जो आर ऑब्वियसली राइट लीनिंग, एंड दे टॉक सच क्रेजी स्टफ विच इज एंड सो नॉर्मली कि मजा आता है उनसे बात करने में. हाँ, मतलब that's the normal in Texas. Like मतलब जो हमें क्रेजी लगेगा एक पॉइंट पे सुन के कि वाओ दिस साउंड्स प्रिटी एक्सिलरेटिंग, तो टेक्सास वालों का बेस लेवल रहता है लाइक या दिस इज अ डेली लाइफ, ऐसा टाइप वाला सीन है. maybe let's not go political and let's focus on the tourism part of it. बड़ा I think the नहीं बोल सकता.
नहीं मतलब उस मामले में लाइक हाँ जैसे लाइक स्पेशली कोस्टल ट्रैवल्स सिटी ट्रैवल्स जैसे बोलोगे तो मैंने स्पेशली सोलो ट्रैवल्स लाइक एज वी आर टॉकिंग डिफरेंट फैसेट्स ऑफ ट्रैवल की आपको कैसा एक्सपीरियंस करना रहेगा तो लाइक आई गेस हर एक ट्रैवल का एक अपना पर्सपेक्टिव है कि लाइक आप किन के साथ ट्रैवल कर रहे हो और कब ट्रैवल कर रहे हो जैसे शैल ने बताया पहले जब व्हेन ही वाज ब्रिंगिंग अप की लाइक शहर पहाड़ बीचेस जैसा अपना अपना एक फील है वैसा आप किन के साथ और कब ट्रैवल कर रहे हो वो भी मैटर करता है बिकॉज आई हैव डन सोलो ट्रैवल which has been quite rewarding. I've done travel like Shell and me we have traveled like to a few places when most people bailed out on the trips and I've done larger group travels also जहाँ पे यहाँ पे भी किया हुआ इंडिया में भी we have done so it's just that कि आप कब और किन के साथ ट्रैवल कर रहे हो और किस जोन में ट्रैवल कर रहे हो काफी ज्यादा मैटर करता है. And obviously, the circling back to a previous point which Shreyas made, you do have to have a certain amount of vibe matching in terms of like, ठीक है, आपको कुछ चीजें करनी होगी, आपको कुछ चीजें नहीं करनी होगी, but then at the end of the day, you should be able to get into that zone कि you are able to accommodate the people you are with, be it your partner, be it your friends, or sometimes even yourself, क्योंकि आप sometimes are so hard कि हमें ये करना ही है, तो अगर आपसे नहीं हो रहा है इमेजिन यू आर लाइक वो नॉट बीइंग फिल्मी बट द YGHD डायलॉग जो आई गेस नैना मतलब दीपिका व्हाट शी सेज टू रणबीर like sometimes you have to just be in that moment and sometimes you have to tell yourself that as well like कि just stay in this moment and enjoy it. It's not like कि आप एक पूरा 10 जगह देखने आए तो आप अकेले भी जा रहे हो तो आपको 10 का 10 निपटाना है ठीक है आपकी कुछ मैंडेटरी चीजें हैं आप देखो बट a lot of times it can be कि आप नहीं देख पा रहे हो आप सोलो जा रहे हो you were just enjoying a moment or a place in time जहाँ you should be there so that is also something that जो कर सकते हैं सर just a perspective. So that's true. I mean, but I mean, I would say even in this case, like US में जो हम लोग travel करते हैं, it's a big country with like lot less people. So we have that option कि easily हम लोग solitude में जा सकते हैं, solo travel करना कर सकते हैं, या फिर बड़े cities में भी जा सकते हैं. I think India would be a slightly tricky sort of situation in that particular case क्योंकि if you want to go in the middle of nowhere वहां पे options शायद थोड़े कम रहेंगे यूएस में हमें अभी जितनी आदत हो गई उससे ज्यादा so अभी जैसे वल्लभ ने बोला था कि at the beaches you are like by yourself to an extent although बाकी लोग हैं फिर भी समंदर का आवाज matters a lot क्योंकि that puts you in that meditative trance kind of a thing. और यहाँ बहुत फ्रीडम भी मिलता है यार it you kind of मतलब if you go to scuba dive there's nobody there मतलब ऐसे scuba school रहेगा necessary नहीं है you probably just have to go with all the gear and do it yourself वैसे ही कहीं भी जाओ तो थोड़ा सा independence freedom और kind of like there's nobody to help you even like no you have to be self-sufficient a lot of times. Yeah, exactly. So exactly मतलब अभी इस पे I would like to ask Nandita this like from her travel experience क्योंकि वही इंडिया में ऐसा कितनी बार लगा होगा like after you are in your 20s or after you become independent कि you need to be by yourself into basically कहीं पे भी जाओ you don't want to deal with anyone or friends or people and इंडिया में शायद उतने options नहीं मिलते except you go to really remote Himalayas or desert or something like that, I guess. Yeah, that is true. I think only if you go to the Himalayas or the desert, that's when you will not deal with people. But honestly, I've never traveled with that concept ki yaar, I don't want to meet anybody or I have always traveled with the thing that I want to see new places or I want to meet new people. So most of my travel has always been in that. But to what Nikita kind of mentioned, right? It kind of brings out that you need to be independent and you should be self-sufficient. I think I've experienced that in a lot of my travel. So one of it was a Himachal trek, which me and my sister took, and we took it with YHR. And you had like 60 odd different people who just come in. You obviously don't even know who are your group mates. So you met 60 people, and it's like a 10-day long trek. And you have to go around with strangers. So you kind of know like 60 different personas, if you may actually say, that you know how people are. And there are also people that you don't know from the background what they're coming from. So you get to meet new people, but you also get to experience like 10 days trek. In that, there's been an incident where, so when we were climbing,
And so I went to Chandrashila trek, and which is like about 13,000 feet high. So I think on the last 2 days before that, I kind of felt sick and ended up having typhoid right on top. Now we didn't know if I had to like continue climbing or you have to come down. So we had like a doctor within the trek site itself, and he suggested, you know what, I think you're extremely weak. You have to either be on antibiotics to complete the next 2 days of trek, or you might as well stop taking antibiotics and start climbing downwards. And even to climb downwards, it's going to take about 2 days to reach to a city where you will actually have access to bus or cars or jeeps or anything like that. So I said, hey, listen, what's the point? Like 2 days to reach on top or 2 days to reach down. It might as well take 2 days to reach on top, right? And then see, however, when the entire 60 people are coming down, you just come down with them. So that, I think that one trek kind of taught me that it's always mind over body, which everybody tells you in school that, you know, you put your mind to something, it's never about your body and all. And you feel like, you're just like saying stuff like normally that everybody would say just to pump you up or like to make sure like, you know, you're motivated to do things. But I think that trek kind of made me experience that, yes, it's always mind over body. You can have like 104-degree fever, but if you decide that you want to climb on top, you should be self-sufficient. You need to make sure that you are carrying your 10 kgs of baggage, which is literally on your backpack, and you have to climb up. That has been one where I've realized that I had my own sister who was ready to help me out, but she also had like a 10 kg baggage of herself. So she's supposed to carry hers. I can give something of mine, but you cannot overload a person when you're climbing up, right? Because you are already suffocating with less of oxygen. So yeah, and I think that trek I realized that you're on your own, irrespective of how much they say family is always with you and everything, which is all great because it's for motivation. But there are times you have to be very, very much self-sufficient.